गाइस, अगर आप आइस के बारे में भूल गए हैं तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आइस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एंड इन्फोर्समेंट वाली जो एजेंसी है यहाँ पर, जो डिपोर्ट करती है इलीगल लोगों को या जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं अमेरिका में, उनकी एक और न्यूज़ आई है अभी। 28 साल से रहने वाला एक आदमी यहाँ पर ग्रीन कार्ड पे है, 28 साल से रहने वाला, उसको डिटेन कर रखा है और वो डिपोर्ट हो सकता है वो आदमी। हैव टू बी फेयर, ये कोई इंडियन आदमी नहीं है। इस आदमी का नाम है डेटन आंड्रे लिंडसे, जो एक जमैका से आया हुआ है आदमी, और यहाँ पे अमेरिका में 28 साल से रह रहा है। उसके पास ग्रीन कार्ड भी है और वैलिड है ग्रीन कार्ड। और वो अभी रिसेंटली इसी साल फरवरी में 28 फेब को जमैका से ट्रिप मार के आया 5 दिन की। उसका होम टाउन जैसे हम लोग इंडिया से है ना, वो जमैका से है, तो जमैका होके आया 5 दिन की ट्रिप से, और वापस आते ही एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचा उसको आइस ने डिटेन कर लिया। अब वो डिपोर्ट हो सकता है। अब ये बिकॉज ये इंडियन की नहीं है, मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी काफ़ी मिलती जुलती है। ये आदमी ग्रीन कार्ड पे होते हुए भी जमैका होके आया और उसको डिटेन कर लिया। हम लोग इंडियंस जो यहाँ पे एनआरआई जो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग ग्रीन कार्ड पे होते हैं, राइट, वो इंडिया जाते हैं और जब वो इंडिया से वापस आते हैं उनको भी रोक लिया जा सकता है। इसलिए बना रहा हूँ, इसकी स्टोरी देखें और सीखें इसने क्या किया, क्या गलती हुई इसके साथ, और वो गलती अवॉइड करें। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। शुरू करते हैं आज की वीडियो। You may not see the images as often, but immigration arrests are still taking place. Right now, more than 80% of the cases end in deportation. WGN's Lourdes Duarte introduces you to a couple caught up in the system. An estimated 13 million people in the U.S. hold green cards. They're not citizens. They're legal permanent residents, a documented status that for years felt secure. Not anymore. A former Chicago area official who spent 30 years working inside the federal immigration system is beginning to share her experience and weighed in on the case of a Jamaican man suddenly arrested and fearing deportation. We have a lot of mutual friends, and so we eventually met. These days, Benji Lindsay shares her husband's story through pictures, from family gatherings to romantic vacations. Dayton been trying to get me to go out with him for almost probably about 6 months before that. And I kept saying, no, I wasn't interested. She eventually caved and married him 6 years ago. They've been together ever since, until 3 months ago when the couple returned from a trip to Jamaica and her husband, who has lived in the U.S. for 30 years, was stopped by an immigration agent at O'Hare. She was very nice, and she was like, unfortunately, we're, due to new regulations and further screening process, we're going to detain him. That was the last time she saw him. Dayton Lindsay is in the U.S. legally. He has a valid green card and has traveled to his home country of Jamaica many times before. So he never expected to be detained by immigration. His story is similar, though, to others we've heard before as immigration arrests rise. ओके, स्टोरी सो फार। यह है बेंजी लिंडजी, डेटन एंड्रे की वाइफ, जो कि 6 साल पहले इनकी शादी हुई दोनों की, और फरवरी में अबाउट 4 महीने पहले, और उसको जब जमैका से वापस आ रहे थे तो उसको डेटन को रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया। और उसको रोका इसलिए कि एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी के लिए, बेसिकली जब आते हो ना आप तो एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग के लिए अलग से ले जाते हैं। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम बेंजी ने अपने हस्बैंड को देखा था। 4 महीने से या 5 महीने से अब वो आइस की डिटेंशन में है और हो सकता है वो डिपोर्ट भी हो जाए। क्यों रीज़न है वो आगे बताता हूँ आपको स्टोरी में, पर अभी तक आप देख लो कि 6 साल पहले इनकी शादी हुई। अब ये कागार पर है कि डिटेन हो सकता है उसका पति। Things are different than they ever used to be. Nobody knows that better than Gail Montenegro. She spent 30 years working within the immigration system, including its courts. She retired recently and is now beginning to speak up about the changes she's seeing. I think everyone in the system is under a great deal of pressure to increase numbers, increase arrests, increase removals. Some of that has played out on camera as immigration arrests by federal agents made headlines. She helped us make sense of Dayton Lindsay's case as the couple made the rare move of sharing their experience over the last 3 months with us, even before a final decision is made by a judge. So were you thinking like, okay, let's go away from it? That's Dayton. Oh, is it really? Yes. Yeah, answer. We were there when her husband called home. He says he has lost 25 pounds while detained first at Broadview, then Indiana, and now Kentucky. From Monday to Friday, I have to drink water out of my hands.
And how's the food? That's terrible. Do you get any fruits and vegetables? Since I've been here, vegetables, no. It's very hard to explain or for him to grasp that he's being detained and has been detained so long and hasn't committed a crime. So what led to that immigration arrest? We looked through documents that detail prior traffic tickets, a DUI, and a domestic battery charge. All of those were more than 10 years ago, though. In that time, he's traveled to and from the U.S. repeatedly. In a court document, the judge writes the court recognizes that some of these offenses individually are not particularly serious, but in total, they show a habitual disregard for the law. Even though he was eligible for bond, the immigration judge denied his release. And so this, to me, is an example of how the administration's enforcement strategy is becoming stricter. In order for that domestic violence conviction to be a deportable offense, historically it would have to have a sentence of a certain amount of time or more, and this didn't rise to that threshold. So far, the couple has spent $40,000 to fight the case in court, but say numbers are not in their favor. Jamaica's not his home. It hasn't been his home for a long, long time. And the reality of it is that if he is deported, then our whole lifestyle would change. The Trump administration has said their stricter measures are a way to close immigration loopholes. That means Dayton Lindsay's case is a common experience, whether you're documented or not. ये थी डेटन एंड बेंजी की स्टोरी। अब मेन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है कि भाई ऐसा क्या कर दिया इसने जो इसको डिटेन कर लिया, और वो भी 28 साल से ग्रीन कार्ड वाले बंदे को, राइट? बताता हूँ इसकी स्टोरी आपको। सॉरी, 28 साल से ये अमेरिका में था, 17 साल से इसके पास ग्रीन कार्ड है। तो जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें पढ़ो आप। DHS स्पोक्स पर्सन, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, टोल्ड न्यूज़वीक ये जहाँ से जो सोर्स जिससे मैंने ये आर्टिकल उठाया है, लिंडसे एंटर्ड द US ऑन अ वीज़ा इन 1990, अगेन इन 1996. In February 2005, he was charged with driving on a suspended या revoked license and improper passing on a motorcycle. मतलब ये 1990 में आया अमेरिका, फिर 96 में भी आया, पर इसने बाद में 2005 में सस्पेंडेड और रिवोक्ड लाइसेंस पे ड्राइव करते हुए पकड़ा गया। अगेन इन अप्रैल 2005 इसके ऊपर DUI का चार्ज लगा, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। 2005 में वो चार्ज भी लगा। दिसंबर 2006 में ही वॉज रिमूव फ्रॉम कंट्री। जुलाई 2007 में लिंडसे एंटर्ड द कंट्री यूजिंग अ फ्रॉडुलेंट जमैकन पासपोर्ट एंड US वीज़ा। फ्रॉड भी किया उसने। एंड 2014 में उसके ऊपर डोमेस्टिक बैटरी का चार्ज भी लगा। डोमेस्टिक बैटरी मतलब घरेलू हाथापाई का मामला आया, उसके ऊपर चार्ज लगा उसके ऊपर। इतने सारे केसेस। तो जज ने बोला भाई ये मे बी टिकट टू को DUI वगैरह इट्स नॉट अ बिग डील, बट जब सब साथ में मिल गया ना, और वो जो बैटरी डोमेस्टिक बैटरी जो चार्ज लगा हाथापाई का, जब इस सारे चार्जेस साथ में आ गए तो इससे वी कैन सी यू आर अ पर्सन ऑफ नॉट अ गुड मॉरल कैरेक्टर, इसलिए उसको ये डिटेन कर लिया गया और अब उसके बाद डिपोर्टेशन हो रही है। ऑल्दो ये सारे चार्जेस पुराने हैं, राइट, 2005 के हैं, 2014 के हैं, पर द थिंग, और इसके बाद भी इन सारे चार्जेस के बाद भी ये कई बार अपना ट्रिप मार के आ चुका है जमैका की, तब नहीं कोई प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम हो रही है अब, आपको पता ही है, ट्रंप ने आया है, ट्रंप ने सारा इमिग्रेशन पॉलिसी हिला रखी है, तो भाई वो तो कर रहा है। अब वो करेगा तो फिर जो ऐसे केसेस हैं जो तब किसी की नज़र में नहीं आए अब आ रहे हैं। मतलब DUI लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद भी कार चलाना, कंट्री से रिमूव होना, और डोमेस्टिक बैटरी का चार्ज, और फ्रॉडुलेंट जमैकन पासपोर्ट एंड वीज़ा पे अमेरिका आना, ये सारे चार्जेस होंगे तो आपको निकालेंगे ना आइस। तो दैट वाज अ वीडियो गाइस। मैं बस इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये कोई इंडिया आदमी नहीं है, पर ये केस, ये सिचुएशन किसी की भी हो सकती है कि भाई हम लोग भी इंडिया जाते हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग ग्रीन कार्ड पे रहते हैं, तो छोटे छोटे चार्जेस भी ना कल को आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दैट। दैट्स द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। आपके कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।